This is the last part of the endocrine system. Now coming to the next part of this chapter, that is the properties of hormones. So these are some properties of hormones. Like first, hormones have low molecular weight. Because they have low molecular weight, they can easily pass through the capillaries and go into the venous blood. And we have also seen that the hormones are produced by the endocrine glands, so they are poured into the venous blood and are soluble in water. They are also non-antigenic, meaning they do not produce antibodies. And you'll find that they are needed in very trace amounts, very low concentration. And this low concentration is just enough to do the necessary changes in a particular cell in the target organ, because this is going to amplify this signal they receive from the hormones and do the changes, physiological changes in the cell. But when their function is over, the hormones are destroyed or inactivated or excreted out in the urine. And you will find that many hormones are produced in an inactive form, that is called as prohormones. And a hormone will affect one or limited number of reactions. Now coming to the chemical nature of the hormones. Based on the chemical nature, so first category is amino acid derivative, meaning that hormones are derived from amino acid. तो कौन सा amino acid? Tyrosine. तो ये दोनों जो examples हैं, that means amino acid derivatives और iodothyronine, ये कहाँ से किस amino acid से derive हुए रहे हैं? Tyrosine. So both are derived from tyrosine. So you have first, but since NCERT में ये दो अलग अलग categories हैं, first amino acid derivative and the other iodothyronines, so I have kept it this way only. So you'll find that epinephrine and norepinephrine कहाँ से release हो रहा है? From the adrenal medulla. Basically क्या है? Catecholamines किससे derive हो रही हैं? From the amino acid tyrosine. Catechol क्या होगा? 1,2-dihydroxy benzene. मतलब बेंजीन में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे, और चूंकि ये दैट इज कैटेकॉल और अमीन्स एक अमाइनो ग्रुप अटैच होगा. सेकेंड ग्रुप इज आयोडोथायरोनिन्स. आयोडोथायरोनिन्स में थायराइड हॉर्मोन्स हैं, दैट इज थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन. थायरोक्सिन T4 or tetraiodothyronine and T3 or triiodothyronine. These are also derived from the amino acid tyrosine. मगर इसमें क्या attached हैं? Iodine atoms will be attached. थर्ड वाला ग्रुप कौन सा है? पेप्टाइड्स का. तो ऑक्सीटोसिन एंड ADH कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंड यूल फाइंड बोथ दे आर शॉर्ट पेप्टाइड हॉर्मोन्स, मतलब इनमें कुल 9 amino acids होंगे in their peptide chain, whereas calcitonin, ACTH, MSH are long chain peptides. For example, in case of calcitonin, they are 32 amino acid. In case of ACTH, there are 39 amino acids in their peptide chain. Next, third, fourth group will be proteins or polypeptides. कौन से हैं? Hormones that are secreted by the anterior lobe of the pituitary, और hormones कहाँ के? Pancreas, that is insulin, glucagon, GIT के सारे proteins हैं in nature. Next group you have glycoproteins. So glycoproteins FSH and LH, that is the gonadotropics. These can come under proteins also, but since इनका एक carbohydrate group attached है, so we have listed them under glycoproteins. Last group है steroids. कौन से हैं? सारे sex hormones, that means hormones जो testes और ovaries secrete करता है, plus hormones from the placenta, which I have not done this year because in the next 12th class you'll be doing it, और hormones secreted by the adrenal cortex. ये सारे क्या हैं? steroid. कहाँ से डिराइव हुए हैं? कोलेस्ट्रॉल से. नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. हमने देखा है कि हार्मोन डायरेक्टली रिलीज होता है ब्लड में, वीनस ब्लड में, और वो ब्लड कहाँ जाता है? सब टिश्यूज को. लेकिन कुछ ही टिश्यूज रिस्पॉन्ड टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन. कुछ ही टिश्यूज क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन? बिकॉज
they have receptors on their cell surface, and हार्मोन उसी टिश्यू पे असर करेगा जिसको हम टारगेट टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं. रिसेप्टर्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं जो रिकग्नाइज करता है हार्मोन को और बाइंड करता है उसके साथ. जैसे कि अगर हम लिवर सेल्स देखेंगे, लिवर सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स हैं. किसके लिए? इंसुलिन के लिए, ग्लूकागॉन के लिए, ग्रोथ हार्मोन के लिए, एपिनेफ्रिन के लिए. अगर बोन सेल्स देखेंगे उसके पास कौन से रिसेप्टर्स होंगे? ग्रोथ हार्मोन के लिए होगा, पीटीएच के लिए होगा, कैल्सिटोनिन के लिए होगा, मगर बाकी के लिए नहीं होगा ना. ओवरीज और टेस्टिस के लिए देखेंगे तो उनके पास रिसेप्टर्स किसके लिए होंगे? एफएसएच के लिए होंगे, एलएच के लिए होंगे, नॉट फॉर पीटीएच और कैल्सिटोनिन. तो तभी that's why only a specific tissue which we call as a target tissue are affected, because they have receptors on their cell surface which these particular hormones recognize and bind and alter, change the biochemical reactions of the cell, particular cell or tissues. So इस basis पे hormones can be of two types. कौन से? You have water soluble hormones, meaning they are soluble in water. कौन से वाले? जैसे कि एड्रेनलिन है, वैसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन. तो ये चूंकि वाटर soluble है और हमारा सेल मेम्ब्रेन, as you have read, it is made up of lipid bilayer. तो चूंकि ये वाटर soluble है, they cannot pass through the lipid bilayer. तो इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे? इसके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन में एम्बेड होंगे. They will be present on the surface of the cell membrane. और that means ये वाले हार्मोन्स सेल के भीतर में नहीं जाएंगे और इनके रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन पे है उसके साथ बाइंड करेंगे. तो लेकिन उसके बाइंडिंग से क्या होगा? तो इनको हेल्प की ज़रूरत होगी. सो उसके बाइंडिंग से they activate what we call as second messenger. तो फर्स्ट मैसेंजर कौन सा हो गया? हार्मोन. सेकेंड मैसेंजर्स विच इज गोइंग टू रिले द सिग्नल फ्रॉम द हार्मोन एंड टेक इट इनसाइड द सेल, and so that they carry out various biochemical changes in that cell. अब second messengers कौन से हो सकते हैं? Like cyclic AMP, IP3, calcium, and they are going to help in changing the physiological function of that cell. अब दूसरा कौन सा हार्मोन है? लिपिड soluble hormone. अब लिपिड soluble hormone means that they can pass through the lipid cell membrane. Since they can pass through the lipid cell membrane, तो सेल के भीतर में घुस के इसके रिसेप्टर्स होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या तो न्यूक्लियस में होंगे. So now that's what we said here. Hormones produce their effect by binding to specific proteins called as hormone receptors located on the target tissue only, and each receptor will be specific to one hormone. So receptors can be of two types. You have the membrane bound receptor, you have the intracellular receptor. Now coming to, so this is a membrane bound receptors. Membrane bound receptors, like you have the proteins, so these are membrane bound receptors. And here they have shown you an example. This is the cell membrane. किसका दिखाया है? Ovarian cell membrane का. So this is the phospholipid bilayer here, and in this, within the cell membrane, you have the receptor present. So this hormone, for example, they have given FSH, that is follicular stimulating hormone. So this hormone is going to bind to this receptor, और इसके बाइंडिंग से a hormone receptor complex will be formed. और इसके बाइंडिंग से what will be generated, what is the first response, will be generation of second messenger. Like you have cyclic AMP, like you have calcium, IP3, etc. And these second messengers, either they will bind to the DNA and start transcription of those particular genes, or by other indirect methods they are going to produce the biochemical responses in a cell. And biochemical responses by formation of
enzymes that is going to alter the biochemical response, accelerate it, and as a result produce the physiological response. For example, in this case, ovarian growth. Like we said, what is the function of a follicle stimulating hormone? That is, it's going to cause the growth of the ovarian follicles. So this will be the response to the FSH when it binds to the receptor here. So on this right hand side, we have shown you the diagram. This is the hormone, एक protein है. So this is the three-dimensional structure of the protein as the receptor. ये हार्मोन है, ये बाइंड करता है फॉर्मिंग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. इसके बेस पे एक जी प्रोटीन है, व्हाट वी से एज गुआनोसिन बाइंडिंग प्रोटीन. और जब ये दो बाइंड करता है आपस में, तो ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है. और इस जी प्रोटीन से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट GTP विल बी रिलीज्ड. और इस मेम्ब्रेन में एक और एंजाइम है, दैट इज एडेनाइलेट साइक्लेस. सो GTP इज गोइंग टू एक्टिवेट दिस एडेनाइलेट साइक्लेस. और वो क्या करता है कि ATP जो है सेल में, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक AMP. और ये साइक्लिक AMP कैन एंटर द न्यूक्लियस, बाइंड करेगा DNA के साथ, और वो जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे, एक्सप्रेस होंगे जो इस रीजन में है, एंड दैट प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म. प्रोटीन इज अ enzyme and that is going to catalyze various biochemical reactions in a cell. So the cyclic AMP as a result will bring about the changes in a cell. कुछ भी changes हो सकते हैं, like permeability में change होगा, increase in protein synthesis, activation of other cellular products, so that that particular physiological response is produced. So this is an example of a membrane bound receptors which are present in water soluble hormones like you have in case of the protein hormones. Now coming to the next, so what we have here, only this only, that the membrane bound receptors, what are these? Transmembrane receptors. कहाँ पे present है? Embedded in the lipid bilayer of the cell membrane. और जो first messenger हमने बोला था क्या है? Water soluble hormone. They cannot pass through the lipid membrane and bind to specific receptors on the cell membrane to form a hormone receptor complex. और ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस है, ये एक्टिवेट करेंगे स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स कॉल्ड एज जी प्रोटीन्स और गुआनोसिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. और जो स्पेसिफिक जी प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट क्या करेगा? इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड मैसेंजर्स. लाइक यू हैव साइक्लिक AMP, यू हैव साइक्लिक GMP, कैल्शियम है, IP3 है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, DG है, protein kinases है, etc. And these will bring, that is cyclic AMP और बाकी जो intracellular messengers है वो bind करेंगे to specific segments of the DNA and can trigger expressions of those genes. और genes से क्या बनेगा? Proteins which can act as enzymes. So enzymes will be generated, जो एक cell के characteristic response है to the hormone will be produced. So जो सेकेंड मैसेंजर है एम्पलीफाई करता है एक हार्मोनल सिग्नल को बाय जनरेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स which will cause the biomolecule changes in a cell. So next will be intracellular receptors. So intracellular receptors हमने किसके लिए बोला था? स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए एंड आयोडोथायरोनिन्स के लिए. सो सिंस दे आर लिपिड सॉल्युबल, सो चूंकि लिपिड सॉल्युबल है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल कौन सा दिया है, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोजन है, तो ये लिपिड सॉल्युबल है बिकॉज एस्ट्रोजन इज वन ऑफ द हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम द ओवरीज. सो ये एंटर करेगा थ्रू द लिपिड बायलेयर डायरेक्टली. अब इनके लिए रिसेप्टर्स या तो साइटोप्लाज्म में होगा या तो न्यूक्लियस में होगा. सो वी हैव हियर शोन दैट फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस. और ये estrogen is going to bind to the receptor and form a hormone receptor
कॉम्प्लेक्स. एंड ये जो पूरा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बाइंड करेगा? डीएनए के साथ. As a result, transcription शुरू होगा. What is transcription? Formation of an mRNA that will go to the cytoplasm, जहाँ पे ribosomes पे they are going to synthesize that particular proteins. और वो particular proteins can act as an enzymes or directly can cause physiological responses in a cell. Like if you have taken estrogen, और estrogen के functions तो हम बहुत सारे बोले थे. Like you have maturation of the secondary sex organs, like you have the uterus, you have the vagina, you have the fallopian tube, uska tissue growth differentiation, फिर external sex characters, uska growth and differentiation. So all these responses will be under the influence of this hormone, that is estrogen, और वो ही produce करेगा via this pathway. So this was about the steroid hormones which have intracellular receptors. So that's what we have written out here, that intracellular receptors kahan pe present hai? Inside the target cell, and can be present ya to nucleus mein, nuclear or cytoplasmic, that is within the cytoplasm. Lipid soluble steroid hormones या iodothyronins है etc. है, they cannot pass through the lipid cell membrane. और किसके साथ बाइंड करेंगे? with specific intracellular receptor proteins. और जो ये hormone receptor complex है ये एंटर करता है न्यूक्लियस के साथ एंड बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस और इंड्यूस क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन या एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट जीन्स. और जो एमआरएनए प्रोड्यूस होता है वो साइटोप्लाज्म में जाके सिंथेसाइज करेगा वो एंजाइम प्रोटीन मॉलिक्यूल को इन द साइटोप्लाज्म. और वो एंजाइम्स क्या प्रमोट करेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन अ सेल, एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स in a cell. So this is how an intracellular receptor binding to a particular hormone will affect a cell. So that's all for today, and with this video we have finished the chapter of chemical coordination and integration. So if you have any doubt, contact us, and the next chapter that we are going to start will be animal kingdom. Thank you and God bless you all.